So here Article 341, Article 342, they prevented Parliament from subcategorizing the SCs and STs. So this is the issue. So अगर again अब subcategorization की बात हो रही है, उसको implement किया जाएगा तो constitutional amendment would be required for that. And Article 16 clause 4 Manjiri, it is written maintaining that nothing in the Constitution's articles. maintain that nothing. 1 minute. However, even the NCSC and these had to maintain that nothing in the explicitly prevented. ठीक है, हाँ पूरा तो ऊपर से है. हाँ तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कैटेगराइजेशन प्रोवाइड की जा सकती है. Under Article 341, 342 and Article 16 Clause 4, it provides the states to create special provisions for any backward classes if felt they are underrepresented. तो overall जब हम reservation की बात करते हैं तो then it is Article 16 Part 3 of the Constitution under Fundamental Rights. So FCRA registrations हमने बात करी काफी दिन से. We've been talking about examples. Foreign Contribution Regulation Act 2010. So it regulates the funding of the NGOs, non-governmental organizations. So recently Center for Policy Research and World Vision India, उनका license cancel हुआ and it is operated by the Ministry of Home Affairs. So it monitors the implementation and foreign donations जो आती है, अगर आप उसको misuse कर रहे हो, if you're using that to spread more enmity and hate in the community, so ये एक major हमें issue देखने को मिलता है of the misuse of the funds. So 2010 में पहले जो 1976 एक्ट था उसको रेगुलेट करके it was repealed. 2010 में we have the FCRA Act which replaced it. And 2020 में और amendments किए गए FCRA में. So under that आपका जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, 5 साल तक वैलिड रहेगा, फिर से आपको रिन्यू उसको कराना पड़ेगा. एंड जो रजिस्टर्ड ग्रुप्स है, रजिस्टर्ड एनजीओज हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव कर सकते हैं ओनली फॉर सोशल, एजुकेशन, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्राम्स एंड पर्पसेस. सो सिंस 2015 अगर हम बात करें, सो 16,000 एनजीओज की रजिस्ट्रेशंस कैंसिल की गई हैं फॉर द वायलेशन ऑफ द रूल्स. So fairly around like 19,000 अभी currently we can say licensed NGOs जो इंडिया में अभी functional है. So अगर हम यहाँ देखें 20 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ है इंडिया में. 20 लाख है, ठीक है. 16,000 टोटल एनजीओ है, लेकिन नंबर ऑफ सच एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए वो बहुत कम है, 22% से कम. तो रजिस्टर्ड कितने हैं? ओवरऑल 20 लाख है, लेकिन जो फंडिंग मिलता है एफसीआरए के अंदर में वो सिर्फ 2% है. और अच्छा. 16,000 एनजीओ हैव बीन कैंसिल्ड फॉर द वायलेशन फ्रॉम 2015. ठीक है. और अभी जाकर के 16,900 एफसीआरए रजिस्टर्ड है, एक्टिव है. और 6,000 का एमसीआरए फिर कैंसिल हो गया वायलेशन में. 55,000 करोड़ ये दे चुके थे पहले भी, कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन है लास्ट 3 ईयर्स में. और इनका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल इसलिए किया गया दो एनजीओज का कि देवर जो फंड्स उन्हें मिले थे, दे यूज दैट फॉर द प्रोटेस्ट एंड लीगल बैटल्स अगेंस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में. सो इट इज बिलीव्ड कि ये जो फंड्स है मिसयूज किए गए टू अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कि अगेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट में और जो स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए उसमें उन्होंने हिंड्रेंस क्रिएट करी. So intersectionality of gender and caste and women's participation in the labor force. So in this picture you can see farmers are preparing the field before planting vegetable saplings in the Nabarangapur district, Raigad area in South Odisha. So this is also you can say, I think ये कोई horticultural crop हो सकता है, vegetable saplings यहाँ लिखा ही है वैसे तो. So we talk about कि agriculture sector में specifically feminization of agriculture. So structural rigidities इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर में. So that has been one of the hindrance for increasing the women labor force participation rate. And
सो उसकी वजह से वुमेन का जो अगेन पार्टिसिपेशन है ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में ही रहा। सो 90% ओवरऑल जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो 90% इनफॉर्मल सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। And when we look it from the lens of caste, the results of studies, they have been conflicting. Labor force participation rate on the basis of the caste. So importance of education for women increases to access employment. So agar suppose there's a woman from a higher caste, so because of their economic condition, historically देखा गया उनके chances ज़्यादा है to access education, translating into better employment. तो एक ये भी रीजन बोल सकते हैं। एंड so even women from lower caste, they have opted for the public sector jobs due to reservation. And also women from the upper caste have the lowest work participation rates, with the female labor force participation increasing as we go down the caste hierarchy. So एक ये भी we can say कि आयरनी है कि जो एजुकेटेड वुमेन है जो अपर कास्ट से ज़्यादा आती हैं उनका वर्क पार्टिसिपेशन सबसे कम है, एंड जो लोअर कास्ट से उनका ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है डिस्पाइट सो मेनी चैलेंजेस। तो ये अगेन इसके पीछे इकोनॉमिक रीज़न ही हम बोल सकते हैं मेन। जो इकोनॉमिक रीज़न ही डिसाइड करता है कि उनको ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, वो ही डिसाइड कर रहा है कि वो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो फैक्टर भी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही डिसाइड हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें कि वुमेन पार्टिसिपेशन रेट रूरल इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे कास्ट डिटरमाइन करती हैं। तो यहाँ पे यही होगा कि जो लोअर कास्ट से होंगी इनफॉर्मल सेक्टर में उनको और मीनियल जॉब्स में रिक्रूट किया जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर में। सो फ्रॉम लोअर कास्ट दे हैव बीन हायर पार्टिसिपेशन इन इनफॉर्मल एक्टिविटीज इन डिप्रेस्ड लेबर मार्केट कंडीशंस with limited social mobility to women in any given scenario. So socio-economic caste census 2011 में last time किया गया, utilized to scrutinize, analyze the labor force participation rate तहसील level. So women का again impact और important role भी रहा है in terms of revenue generating non-farm economic activities within the informal sector at तहसील level. So इवन जो रूरल इकोनॉमी लोकल लेवल इकोनॉमी है उसमें हम बोल सकते हैं ओवरऑल इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो अगर यहाँ बात करें कि वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रूरल इनफॉर्मल इकोनॉमी टेंड्स टू राइज, दो प्राइमरी कंडीशंस होती है 7 स्टेट्स में ऐसा देखा गया कि दो कंडीशंस अगर मीट हुई तो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल इनफॉर्मल इकोनॉमी में इंक्रीज होता हुआ गया। तो पहला तो है कि देयर इज हायर नंबर ऑफ लोअर कास्ट हाउस होल्ड होंगे, तो वी आर सीइंग कि लोअर कास्ट वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूरल इनफॉर्मल सेक्टर में, तो वो इंक्रीज होगा। सेकेंड, there is high prevalence of female headed households, then also their participation was seen to be more. And when they are economically disadvantaged, तो women headed households when they're economically disadvantaged, तो हम बोल सकते हैं हाँ दो मेन चीज़ें, दो मेन फैक्टर जो इंटरप्ले कर रहे हैं, इकोनॉमिक और एक कास्ट। एंड देन जेंडर बाइस की हम बात करते हैं तो वो भी उसमें भी हम बात करते हैं अगेन जेंडर बेसिस पे भी कौन सी एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में आपको एम्प्लॉयमेंट इजीली मिल सकती है। सो हेयर अगर हम बात करें सोशल एक्सपेक्टेशंस जो है फ्रॉम वुमेन टू प्राइमरीली पहले आप हाउस होल्ड पे फोकस करो, केयर वर्क पे, मैनेज द नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड, मोस्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द वर्क फोर्स। तो सोशल सोसाइटल एक्सपेक्टेशन सोशल रीजन हो गया, और जेंडर बायस। एंड वुमेन दे ऑल्सो फेस लीगल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक कुछ कंपनीज ही ऐसी हैं जहाँ पे लॉ ऐसे हैं, रूल्स ऐसे दैट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम वर्किंग ऑन द नाइट शिफ्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो यहाँ पे भी जेंडर बायस आ जाता है। एंड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सोशल पेट्रियार्कल कंस्ट्रेंट्स दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वुमेन even in the informal economy also they have to face these challenges. तो the labor market perspective से बात करें, participation of women in informal sector is
more desirable than the lack of any employment या unpaid domestic work. So it is like कि बिल्कुल ही वर्क ना करने से बेटर तो यही है कि फिर आप इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करो. सो यहाँ पे हम अब ये बात कर सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है. एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इवन रूरल सेक्टर में वी आर सीइंग की अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज इंश्योर की जा रही है एट दी अगेन grassroots level. So these are some of the areas we are focusing upon. Skilling, we're talking about different schemes. PM Vishwakarma scheme is there, and women के लिए stand up India scheme is there to promote more women entrepreneurship, to make available some sufficient amount of funds to them. तो ये हम बोल सकते हैं. And आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की हम बात कर चुके हैं. They also form a part of informal sector only. Spirit of service. We need to learn the value of service and loyalty from Lord Hanuman. Fortitude from the Adivasi mother Shabri, who had the conviction that Ram would arrive, while Nishad Raj, who helped Ram and Sita cross the Ganga in his boat. तो यहाँ हमें इन सभी एक्ट से स्पिरिट ऑफ सर्विस जो है एज अ लर्निंग लेनी चाहिए. लॉयल्टी बोल सकते हैं, कन्विक्शन, सेल्फ बिलीफ. So in Ayodhya temple there is no iron, steel and sandstone से पूरा temple बनाया गया है. So stones have been sourced from Rajasthan. So even उसी stone से we are seeing कि the idols of Hanuman and other deities, they have been carved out of that. Entire temple superstructure will eventually be 3 stories. Temple complex, Nagara style. So artificial foundation जो नीचे stone पे एक base बनाया गया है, एक raised platform, that is the artificial foundation. And around the grand temple is a rectangular periphery जिसको परकोटा बोला जा रहा है. It is a feature found in temples in South India. तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि this is only absolutely सारे features नगरा style हैं. तो a triangular periphery around this temple Perkota, it is found in South Indian temples Dravidian style. And Perkota, it is 14 feet wide and periphery spans 732 meters. So temple will be nestled within the Perkota periphery. So उसी boundary के under we can say temple is located. Mangal Dhwani at the temple. 50 instruments were used. Mangal Dhwani. So Sangeet Natak Academy, the players, they were there. Instruments, these are mentioned: Pakwaj, flute, dholak from UP, veena from Karnataka, then Nadswaram, Tawil and Mridangam from Tamil Nadu. So proper orchestra was organized by the Sangeet Natak Academy members. Mangal Dhwani. So solar rooftop scheme for 1 crore households have been announced. And यही हम बात कर रहे थे कि how we can see कि this step can play an important role in reducing the electricity demand also. तो जो peak demand है वो और reduce हो सकती है. And self sufficiency, self reliance पे focus किया जा सकता है. And at the same time this can also be a source of income generation for the households also, कि जो आपके पास surplus energy आप generate करोगे electricity, आप उसको main grid में supply करके you can earn money also. So role of youth in staying vigilant against the misuse of technology. So Pradhanmantri Rashtriya Bal Puraskar Award for the year 2024. 19 children that were selected.
So large population of youth, which is called demographic dividend, that is important. When we are seeing कि China में population has been declining, the rate of decline increase हो रहा है, it has doubled than the previous year, and उनकी economic growth is also slowing down. So given that, this is a huge advantage which is enjoyed by India. So at the same time, misuse of technology, we are seeing more technologies being promoted. Artificial intelligence की बात करें तो ethical usage की हम बात करते हैं, and how even blockchain technology या how that is being misused as a part of cyber frauds. QR की हमने बात करी थी कि phishing जो है that is a part of cyber crime, a type of cyber crime which is done using the QR codes. So deep fakes और जो financial frauds होते हैं उसमें again youth, because we are seeing more number of youth population active, social media also. So ये जो rooftop solar scheme था, I just missed this, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसको नेम दिया गया. टारगेट इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर 1 crore households. Electricity bill reduce होगा, poor people, middle class will also make India self-reliant. So one horned rhinoceros हम बात करते हैं तो talk about Kaziranga National Park in Assam, and it is also a tiger reserve. So poaching जो horn होता है rhinos का, that is it is believed to be poached, and उसके कुछ medicinal uses भी हैं, they are sold in the market of China. And Brahmaputra river passes through this Kaziranga National Park and Tiger Reserve. So CITES convention is there when talk about how what all conventions are there internationally to prohibit poaching. And I think traffic is also one of the examples under this. Kumki elephants Tamil Nadu में मिलते हैं. These is a specific species. So Tamil Nadu had Odisha government has sought assistance of Tamil Nadu for making Kumki elephants and mahots available in the wake of worsening human-elephant conflict in the eastern state. So these Kumki elephants, these are trained Kumki elephants. They would greatly assist in addressing these conflicts effectively and humanly. Tamil Nadu model की बात की जा रही है in reducing the number of cases of human-animal conflicts. तो Tamil Nadu model जो है, it has been successful commendable program जहाँ पे कुम्की elephants को train किया जाता है, उनको use किया जाता है for wildlife conservation also. So जो conflict prone areas हैं उनमें they can help. So एक तो हम एक साइड बात करते हैं कि how जो sports हैं which are related to the like different animals, for example jallikattu या कबाला की हमने बात करी, and at the same time how we can judiciously put the animals also to use, ensuring कि they are not hurt. तो ओवरऑल इसमें ये बोल सकते हैं कि विद रिगार्डिंग टू द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कुंकी एलिफेंट कैन बी ऑल्सो प्लेस स्ट्रेटेजिकली Yes. टू डील विद अपार्ट फ्रॉम बीज और फिर दूसरे प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. हाँ मतलब So this ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में वो एलिफेंट्स ही animal को use involved होते हैं. यहाँ पे एलिफेंट्स को ही यूज कर रहे हैं कि वो ना हो कॉन्फ्लिक्ट्स. तो स्पेसिफिक क्या है वो तक समझ में लेकिन नहीं है कि इसमें स्पेसिफिक ये कि एलिफेंट्स को ट्रेंड है, तो आई थिंक वो अब एग्जैक्ट पूरा उसके बाद उन्होंने डिटेल नहीं लिखी कि ट्रेंड एलिफेंट भी कैसे. and deployed for forest patrolling rescue operation और ये कि invaluable asset ट्रेंड towards that minimize conflict. देखना पड़ेगा ऑनलाइन.
मतलब ये कैसे करते हैं? बोलने की कोशिश तो यही करे कि एलिफेंट्स ट्रेंड है, तो इसलिए ना वो डैमेज करेंगे जो क्रॉप फील्ड्स हैं, ना वो लाइक ह्यूमंस को जो अगर मतलब दे कॉज डेथ ऑल्सो, तो वो भी नहीं करेंगे बिकॉज दे आर ट्रेंड। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि एलिफेंट्स ट्रेनिंग कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ओ, इसमें कुंकी का मीनिंग होता है, इट अ टर्म यूज्ड इन इंडिया फॉर ट्रेन कैप्टिव एशियन एलिफेंट। तो कैप्टिव एलिफेंट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अवे द हर्ड। क्योंकि अच्छा। एक तरह से देखा जाए तो हर एक हर्ड ऑफ एलिफेंट के हम्म। पास एक दायरा होता है, where they travel from each biosphere reserve to another। तो इसको रोकने के लिए। So IFSC expands the financial services scope, मतलब or more number of financial services being made available. IFSC Gift City Gujarat International Financial Services Center. So like services including bookkeeping, accounting, taxation, financial crime compliance, they have been included as a part of financial services. So ये important है कि whether these kinds of services are an example of financial services or not. तो bookkeeping, accounting है, taxation है, financial crime compliance, and जो financial services center it is regulated by the International Financial Services Centers Authority. So this is also on this name only. To non-residents whose business is not set up either by splitting of the business already in existence in India, or they are reconstructing the business already in existence. So उनको भी वो regulate करते हैं. Baltic Sea कल हमने बात करी थी. It is surrounded by countries like Finland, Sweden, Latvia, Lithuania. हमने बात करी थी कल. एस्टोनिया, हाँ, पोलैंड। एस्टोनिया. हाँ, ऊपर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा टीम्स विन. कबड्डी, जिमनास्ट, आर्यन संयुक्त रीन दे विन. Tendulkar and company get back on the field for humanitarian cause. So star cricketers from 8 countries were in strength playing T20 to move the message "One World, One Family" and throw light on the work being done to provide nutrition, education, healthcare to needy children free of cost. तो इवन जो हम पहले बात करी F1 जो रेसिंग की जाती है, जो स्पोर्ट्स किए जाते हैं, एंड इवन एज अ पार्ट ऑफ जो डिफरेंट क्रिकेट लीग्स भी हैं, so these are also being used for these social and humanitarian cause. So जो again जो reward as a we can say जो पैसा उनको मिलता है, that is used for the social purposes. Cannabis compound that has antibiotic effects. So Jammu CSIR lab, Council for Scientific and Industrial Research. So this is the name of compound THCBD, potent antibiotic effects against the Staphylococcus aureus, which is a bacteria responsible for second most number of deaths due to antimicrobial resistance. So यहाँ से हम factual information ही ले सकते हैं. So antimicrobial resistance, it is again a health concern worldwide because it refers जहाँ पे bacteria, virus, fungi, parasites वो कुछ भी इनमें से respond नहीं करता है to the medicines which is used to treat them. So ये हम याद कर सकते हैं. बायोफिल्म्स, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में. इट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म्स, जो थिन शीट्स होती हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज की, जो ज़्यादा रेजिस्टेंट है टू एंटीबायोटिक्स देन व्हेन दे आर सेपरेटेड. सो cellular mechanisms can efflux the pumps that flush the drugs out from the cells. So AMR की वजह से risk of disease spreading, severe illnesses and death और ज़्यादा increase हो सकता है. So this is one of the, you can say, abhi again this is under development only. This is one of the alternatives that we can say. तो यहाँ पे biofilms हो गए important,
और जो हमने यहाँ पे name of the bacteria Staphylococcus aureus and this is cannabis how the skin help. तो we are seeing कि कुछ ऐसी certain states हैं जहाँ पे कैनबिस और जो कल्टीवेशन है दैट इज अलाउड बट रेगुलेटेड यूजेस और आप उसको आगे किस पर्पस के लिए यूज करते हो तो ऑन दैट बेसिस सो जो यहाँ लिखा है कैनिबिनॉइड्स दे बाइंड टू रिसेप्टर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसमें कैनबिस प्लांट में से जो कैनिबिडॉयल निकाला गया उसको रिएक्ट कराया गया विद हाइड्रोजन यूजिंग पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट सो एक मिक्सचर जो मिला so it had the same composition and order of the atoms but different structures so उसमें से एक बाय प्रोडक्ट ये था so फिर उसको आगे यूज किया गया बैक्टीरियल कल्चर्स इन लैब्स में and there were good results out of this. World's biggest iceberg battered by waves as it heads north. The world's biggest iceberg is named A23A, it is seen in Antarctica. So we're seeing melting of the glaciers, the sea ice because of climate change is a challenge and so it is twice the size of Greater London. So इसमें भी एक ये क्वेश्चन आया था कि अंटार्कटिका में भी वेस्टर्न की ईस्टर्न कौन सा साइड ज्यादा मेल्ट हो रही है तो आई थिंक आंसर इसमें वेस्टर्न साइड है ट्रू वेस्टर्न पार्ट और आइसबर्ग इज इजेक्ट वेस्टर्न है उसके बाद फिर ग्रीनलैंड में आइस शीट सेकंड लार्जेस्ट मेल्टिंग आफ्टर अंटार्कटिका ठीक है सो यहाँ पे साइंस के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टेम्परेचर एट विच ऑल द सॉलिड्स दे स्टार्ट टू ग्लो अ डिम एंड रेड टू ग्लो अ डिम रेड तो उसको बोलते हैं उस पॉइंट टेम्परेचर को बोलते हैं ड्रेपर पॉइंट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस spontaneously catches fire kindling temperature then as a result of which a 3.6 trillion Kelvin objects double in mass special theory of relativity element whose fusion succeeds neon fusion तो ये थोड़ा सा तो ज़्यादा advanced science है temperature above which hadronic matter boils Agron temperature. He is an American mathematician. ये कौशिक आप इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो can start with that. यू कैन टेक मानसी यहाँ आप कवर कर लो इंडियन एक्सप्रेस को फिर आगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस मैं ले लूंगी Namo drone Didi. It talks about the farming with technology, self-reliance of the women, SSG, and the integration of the technology with the agriculture. It gives 10 crore women help to the self-help group. Namo drone Didi. Important scheme. तो आज दो स्कीम पढ़े नमो ड्रोन दीदी एंड सूर्योदय योजना regarding the Lord Ram. He said Ram is Samadhan, solution. Ram is for everyone. His ideas, his vision for the India is the Ram Rajya. How the state, Indian state, should care for its citizen through the welfareism, positive discrimination, and also just governance. तो राम राज का इम्पोर्टेंट
Firecrackers to diya, candle to light. Delhi wears a Diwali look. Shubh Yatra. In the first Ravan worshipping temple in Greater Noida village, welcomes Ram. Believed to be a birthplace of Ravan, the village is known for worshipping the demon king. There also, they have welcomed Ram. This showcases the acceptability in the society and tolerance with each other, thinking and belief. Unique thing. We can write this in GS4. Take this example. One scheme, Abhuwa Awas Yojana. Abhuwa Awas Yojana. Jharkhand specific scheme with regarding to the affordability of houses. More young voter women among one Delhi 1.47 crore electors. Male elector 86, 80. Female elector 67. Third gender also 1000. Total elector 1.4 crore. Obviously, because the demographic different is the mean average is around 29 years. So more young voter will be there. ये एग्जांपल ले सकते हैं फॉर द डिजिटल सर्विसेज लाइक वोटर हेल्पलाइन ऐप CI website for quick